So hi everybody, hope you are doing good. So enjoying the session also, and thank you for supporting a lot. If you have any questions on our previous video or current video or on upcoming video, so if you have any question, please you can ask your question in a comment. We will try to cover your question into the next upcoming video. Or what we can do, we can accumulate your all questions and we will create a separate video or your all questions will accumulatively. But we are waiting for your comment. So let's discuss something on Unit 4, ISTQB Unit 4, that is called test technique. And test technique, generally there is a two type of test technique. First one we are saying the black box, and second one we are saying white box. As we have discussed earlier in the last video or previous video, we can say that black box means simply we are giving the input and validating the output. Doesn't matter how the output is generated. We are not worried about कि प्रोसेस कैसे हुआ, कितना कितने लाइन ऑफ कोड स्किप हो गए, कितने लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुए. सो इफ वी नीड टू डू विदाउट नोइंग द कोड, यदि मैं कोई टेस्टिंग करूं विदाउट नोइंग द कोड, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. इसको हम we are giving the input, we are checking the output is generated. इसी को डार्क भी हम कहते हैं, डार्क बॉक्स टेस्टिंग भी इसी को भी बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसी को बोलते हैं. इसकी कुछ मेथोडोलॉजी है. ये बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी अवेलेबल इनटू द कोड या फंक्शनलिटी अवेलेबल इनटू द प्रोजेक्ट्स. लेट्स से कि वी हैव वन फंक्शनलिटी टू एप्लीकेबिलिटी, या आप उसको ऐसा मान लें कि एक फंक्शनलिटी हमें टेस्ट करना है जिसमें डेटा रेंज है, डेट रेंज है, जिसका जो टेस्ट डेटा है वो रेंज में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम बोलते हैं कि पासवर्ड लेंथ, द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ पासवर्ड should be 6 to 20. So we can say 6 to 20, मिनिमम 6 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर. या हम एक और चीज समझते हैं कि एज लिमिटेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम 18 to 32, right, or whatever range is there. So we need to test on the basis of their data, and data is too much. And we have discussed, we have earlier video, we have in a principle of testing video, we have studied कि like it's very difficult to test any functionality with all set of data, all set of input. So to minimize, to get rid of that things, what is the approach to select the test cases? So these are the test techniques for the black box. So first technique we are saying the equivalence partitioning. Equivalence partitioning means, let's say we have a number, we have a range कि 18 से 32, और in 18 to 32 we said कि if any person below 18 not applicable for jobs, invalid. I am directly saying it's invalid. If any person having the age 18 plus 32, 18 plus or 32, we can say valid data. Or any person above the 32, we are again saying invalid. This is a very simple criteria.
So we need to identify कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने होंगे इसको टेस्ट करने के। तो हमने बोला कि हर एक जो क्लास बन रहे हैं उसमें से एक डेटा उठा लो, एक डेटा उठा लो। तो जो एक डेटा उठेगा इस पिकिंग द वन डेटा फॉर इक्विवेलेंस क्लास, दिस इज कॉल्ड equivalence class. Let's say this is invalid one data below the 18, 17, one data between the 18 to 32, 22, one data plus 32, 35. So these three data, we can test this functionality with these three data. So this is generally we are saying equivalence class partitioning. Coming to the boundary value analysis. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में यदि मैं इसको बहुत डिटेल अब इस फंक्शनलिटी को यदि मुझे टेस्ट करना है तो कितने डेटा से टेस्ट हो जाएगा? 3 डेटा से, 17, 32 एंड 35। इसका क्या बोलते हैं कि यदि एक पे अप्लाई हो गया तो वी हैव कंसीडर्ड कि इट अप्लाइड ऑन ऑल, या 17 से 18 से नीचे किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। हमने बोला इसके बीच में यदि कोई सा भी डेटा हमने 32 पे सिलेक्ट हो गया, वर्क कर रहा है, तो इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द डेटा 18 और 32। और यदि मैंने बोला 32 के बाद 35 से यदि मैंने चेक किया तो हमने क्या बोला कि यदि 35 पे काम कर रहा है तो इट अप्लाई फॉर ऑल। दिस इज वी आर सेइंग इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। पहला हम बोलते हैं टू वैल्यू और सेकंड हम बोलते हैं थ्री वैल्यूज। टू वैल्यूज में लेट्स से सेम रेंज 18 to 32 एंड सेम रेंज वी हैव अप्लाइड ऑन द थ्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम इसे एक और लेके चलते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग था, 18 to 32। अब इसमें क्या हमने लिया था डेटा? इसमें हमने लिया था 17, इसमें हमने लिया था 22, इसमें हमने लिया था 35। These are the circle we have given as case data. In a boundary value analysis, we have covered two value data. That is boundary a -1, that is 17. Boundary +1, 32 plus, I am considering this is the minimum value, this is the maximum value. This is the minimum value and this is the maximum value. So we have considered two value, 18 or -1, minimum -1, 17 and 18. Any value in between, I have considered 23, sorry, 23. Maximum plus M plus, that is 32 and 33. So number of test data including the minimum and maximum range. So for two value boundary value analysis, we are considering the same functionality 18 to 32. We need to have the maximum number of test cases is 5. 17, 18, 23, 32, 33. For three value data, what we need to do? We have considered minimum -1, minimum +1, any value in between, maximum -1, +1 and the M. So if we will consider this three value data, we have covered, let's say 18, 32, so 17, 18, 19, any value in between, that is let's say 23, 31, 32 and 33. So number of test data for three value data 7. Number of test value of two value data 5.
or for equivalence class partitioning we have the 3 value only. So this is the approach to reduce the number of test cases. Now we are coming to the decision table testing. Decision table testing is simply we are saying, let's say for this, if we are considering this is the examples 18 and 32, minimum age limit is 18, maximum is 32. But there is some certain conditions, certain criteria is applied. Let's say a person having the sorry, a person having category OBC, SC, ST, general, and we are giving a certain age limit advantage. So there is a condition applied. A person having the army retired, जब आर्मी रिटायर्ड की मैं बात करूं, लेट्स से अग्निवीर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, अग्निवीर या अग्निसेवा, उसमें 4 साल के बाद उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो जो प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको बोलेगा आप इसके बाद भी यदि आप अप्लाई हो तो वो आएंगे. तो देयर इज अ डिसीजन टेबल, उसको हम बोलते हैं डिसीजन टेबल. Their applicability will totally depend on the certain condition, and there on the basis of certain condition decision is taken care. Yes, no, may or may not. So we are saying there is a table. Let's say for example, for understanding these things, we are creating a table. (18, 32, 32 plus). There is a category. One column. We have said category. I said it a sports person. A sport person. Applied, applied or applied. 45 plus. Not applied. General. Applied, applied. Not applied, not applied. Not eligibles. OBC. Applied, 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 not applied. Let's say army person retired. Army person retired. Applied, applied, applied and applied. So this is the decision tables. On the basis of certain criteria, you need to take the decisions. यदि कोई ऐसी फंक्शनलिटी यदि आपको टेस्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको डिसीजन टेबल टेस्टिंग बनाते हैं. इसी को हम डिसीजन टेबल समझते हैं. नाउ कमिंग टू द स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक. स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक यदि आपको समझना हो तो इसका एक बेसिक एग्जांपल हम समझते हैं. उसका बेसिक एग्जांपल समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से किसी भी प्रोजेक्ट में एक सर्टेन स्टेज होता है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम S0, S1 and S2 and final is the S3, and there is a reach or sequence. Let's say first we will go in the S1, then S3, then S2. This is the state for data transformed from S0 to S2 through the S3. अब यदि मुझे इसको टेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. लेट्स से हमने एक और पाथ बना दिया. जो पाथ कहां से है, S1 से S0. हमने एक और पाथ बना दिया कि S2 से S1, और हमने एक और स्टेट दिया S2 से S0. अब यदि इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा तो टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाथ निकालना पड़ता है. लेट्स से इसको इस तरीके से पाथ करते हैं. इसमें आपको क्वेश्चंस क्या पूछते जनरली कि कौन सा पाथ इनवैलिड है. लेट्स से S0 से S1 से S2, S0 से S1, again S2, no, again S0, then S3.
S naught, S1, S3, S2 एंड S naught। तो ये आपका ट्रांजिशन है फ्रॉम S naught से S2 और S3 के बीच में। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा इनवैलिड है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एरो को चेक करना है। S0 ठीक है, S0 से S1 यस गोइंग, S1 से S2, S1 से S2 जा रहा है, नो देयर इज नो ए पाथ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख जाता है कि ये गलत है। तो ये आपको स्टेट ट्रांजिशन। सेकेंड लास्ट टेक्निक वी आर सेइंग दैट इज द यूज केस टेस्टिंग। यूज केस टेस्टिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द यूजर बिहेवियर। लॉग इन करो, we have logged in, we have entered correct email id, user id and password, clicked on the login. What is the use case scenario for the next? Let's say user have entered 3 times wrong password. What will be the next step? People generally applied for captcha. They said that okay, you need to verify, are you human? So if we need to this type of testing, we are saying use case testing. A state transition testing we have already covered. Decision table testing we have already covered. Boundary value analysis we have covered. Equivalence class partitioning we have covered. So hope you have enjoyed this video, this session. So thank you so much.